वृक्षवल्ल्यां सोयरी वनचरे वृक्षवल्ल्यां सोयरी वनचरे पक्षिः सुस्वरे Reverend Father Shaji George Kochutara, CMI, in his paper on rediscovering Christian eco-theological ethics, says one of the fundamental cosmological insights of the Indian tradition regarding this world is that it is indwelt by the Lord of the universe, and hence it is sacred. Isa Vasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat. This revolving world, together with every minute particle in it, is indwelt by God. Every natural force and phenomenon, for example, sky, sun, moon, rain, wind, thunder, rivers, mountains, forests, etc., is considered to be divine. Human being is not on the earth to conquer, dominate and exploit, but to be an integral part of the organic whole. Spiritually, there is no distinction between human beings and other forms of life, like animals. Even microorganisms are jivas. Humans needed forests and nature for their survival and well-being. Forests needed wild animals for their protection and vice versa. The Mahabharata says, there cannot be a forest without tigers, and tigers without forests. Forests are protected by tigers, and tigers are protected by forests. Global warning. Rising sea level. Drought and flash flooding. Crop failure. Air pollution. Forest fire. Such alarms are the direct results of deforestation, especially the destruction of tropical rainforests. It has been estimated that we are losing 137 plant, animal and insect species every single day due to rainforest deforestation, totaling to 50,000 species a year. Damage to forests and other aspects of nature could halve living standards for the world's poor and reduce global GDP by about 7% by 2050. The loss of certain plant species deprives medical world of herbs for health cure. Even the poison of snakes is used to prepare certain medicines. And no wonder extinction of such species of snakes endangers the world of medicines. Indians, however, still revere nature and worship trees, the Sthala Vrikshas in every temple being the example. Pambai Kandal Padayum Nadungum is an old Tamil saying meaning even a battalion of army is afraid of a snake. However, we always revered snakes as Nagama, snake, the mother. In 1737, at the village of Kecharli near Jodhpur, scant rainfall allows only 4 months of farming. Central to their lives is the Kejari tree, which is almost the only tree that rises to some height, yielding shade, fodder,
and ultimately some timber. People share the grains they raise with animals in need. On a warm and sunny morning of September 1737, Amrita Devi, a Bishnoi tribe woman, heard the sound of someone cutting a tree. Girdhari Das Bhandari, a senior officer of Jodhpur state, mounted on a camel, was ordering his men to cut trees and telling the gathering around that the wood was needed to burn lime. She ran and clung to the tree that was being axed. "Cut my body before felling the tree," she cried. Her bold sacrifice inspired her 3 young daughters, and one after the other, 363 Bishnois Amrita Devi was mercilessly axed along with the tree. For every tree that fell, a Bishnoi man, woman or child laid down their life. The response of the Maharaja is reported that he immediately rushed to the spot and stopped everything. The people were reprimanded who did it, and he exempted all Bishnoi villages, which were on the revenue records, from any kind of tree felling in their areas, as also any kind of killing or slaughtering of wild animals or hunting in those areas. Today, in Kejarli, there is an eerily silent orchard and a temple in it to commemorate the day those 363 Bishnois engraved a message in the conscience of mankind. Namaskaram, Nanki Diksha Andamandam. Suklam Bhadram Krishnam Shashivarnam Shadabhujam Prasannavarnam Jaaye Sarva Vidyopashantaye Tulasi Sheshaki Shubhe Paparani Punyade Namaste Naratamune Narayana Gunadosha Angayet Akashamandap Prithvi Asana Akashamandap Prithvi Asana Ramete Demana Krida Kari Ramete Demana Krida Kari Kataka Mandalu Veha Upachara Kataka Mandalu Veha Upachara Janavi Dobara Avasara Janavi Dobara Avasara Panduranga 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 Panduranga. This tiny village on the outskirts of Bengaluru is famous worldwide. All thanks to this humble lady. She and her husband are credited with planting more than 8,000 trees in their lifetime. Turning her village into a green oasis over half a century. The story started 50 years ago.
A young Timaka and her husband needed an escape from the village stigma that followed a couple who could not have children. Instead, they decided to nurture saplings. That was the beginning of Timaka's tree planting mission. ಯಾಕಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮದು. The villagers saw the couple relentlessly going about nurturing the saplings one by one with love and care. Timaka's story is particularly significant when we look at the sharp decline in green areas across India since independence, which is around the same time Timaka started her mission. All it takes for a country like India to regain the green glory is to have a Timaka, a tree mother, in each village and neighborhood. Future generations may fondly remember Timaka for helping them breathe easy. நமஸ்காரம், என் பேர் பிரயக்ஷ். நான் யூகேலக்கன். இன்னைக்கு எங்களோட கார்டனை காட்ட போறேன். வாவ், திராட்சை என்ன திராட்சை கார்டன்ல செடிக்கு என்னெல்லாம் போடுவாய்? ஃப்ரூட் பீல், வெஜிடபிள் பீல்ஸ், அந்த டீ ட்ரக்ஸ், குட் குட், உணங்கின பூ. வெரி குட் வெரி குட். இப்போ உங்காத்து கார்டன் காட்டுறியா என்னெல்லாம் செடி இருக்குன்னு? வாவ், என்னெல்லாம் செடி மாதிரி? இது சன்ஃப்ளவர். ஓகே. மின்ட், தக்காளி, எவ்வளோ தக்காளி. வாவ். எல்லாம் சும்மா ராடிஷ். ஓகே, இது என்னம்மா? அதுவா கேப்சிகம். ஓகே. இது கேரட், இது பொட்டேட்டோ, இது கொரியாண்டர். ஓகே ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ரொம்ப அழகா இருக்கே. கார்டனிங் பிடிக்குமா திரேக்ஷ்க்கு? ரொம்ப பிடிக்கும். வாவ், ஓகே. எனக்கு அந்த சீட் ஷேப் பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஓ, வாவ் வாவ் வாவ், சூப்பர். உங்க எந்த செடிக்குமா நீ இப்ப பூஜை பண்ண போற? வாவ், வெரி குட். மூலத்தோ பிரம்ம ரூபயா, மூலத்தோ பிரம்ம ரூபயா, மத்தியத்தோ சிவ ரூபேண, மத்தியத்தோ சிவ ரூபேண, அக்ரதா விஷ்ணு ரூபேண, அக்ரதா விஷ்ணு ரூபேண, விருக்ஷராஜயாதே நமஹ. वृक्षवल्ल्यां सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ल्यां सोयरी वनचरे, पक्षिः सुस्वरे आलवीति, पक्षिः सुस्वरे आलवीति, येने सुखे रुचे एकांताचा वास, येने सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगयेत, नाही गुणदोष अंगयेत, आकाश मंडप पृथ्वी आसन, आकाश मंडप पृथ्वी आसन, रमे तेथे मन क्रीडा करी, रमे तेथे मन क्रीडा करी, कथा कमंडलू देह उपचार, कथा कमंडलू देह उपचार, जानवी दोबार अवसर, जानवी दोबार अवसर.
कंक्रीट का फॉरेस्ट नहीं है, ये नेचुरल फॉरेस्ट है, ये पोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है। तो नेचुरल जो है ना, या तो ऑक्सीजन जो मिला है खाती ऑक्सीजन है। वो सुबह 3 बजे आके तो 3:30 बजे 4 बजे आ जाता है। बोट लेके आने से भी 20 मिनट समय लगता है। जब 5 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जब बोट से फिर ऊपर निकलता है, बाईसाइकिल से आ जाता है। उसका आने में जब आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है। जितने भी जंगल, जितने भी पेड़ दिखता है, यहाँ का जितने में, ये मेरा बेटा बेटी सब लोग आते हैं, सब लोग यहीं बैठे हैं। कंक्रीट के फर्श में नहीं रहता, वो लोग एसी रूम में बैठा है, फैन करता है, वो तो पोल्यूशन है, अल्लाह उल्लाह होता है। आदमी से साथ झगड़ा करके मरता है, ये तो झगड़ा करने वाला कोई नहीं है। वो प्राणी लोग अपन अपन काम करता है, अपन अपन खा जाता है, अपन अपन बैठा है, ऑक्सीजन लेता है, यह जिंदे रहता है, आराम से जिंदे रहता है। हॉस्पिटल भी ज़रूरत नहीं है, वेटरनरी भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग का बीमार नहीं है ना। आदमी मुख से बोला है, पता से बोला है, ठीक है ना, हवा से, मौसम से बोला है। जब बैठेगा तो पानी नहीं मिलता है, वो रहने से भी पानी, जब बारिश आता है वो रुक जाता है, यहाँ पानी पिएगा, पानी पिएगा, उसके नीचे पानी आ जाता है, पानी पी लेता है। प्रकृति नहीं भगवान है, ये लोग प्रकृति है। वो लोग हमको ऑक्सीजन देता है जिंदे के लिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग खा लेता है, मेरे को जिंदे के लिए ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब तक पेड़ भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जब खत्म हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला पेड़ नहीं है, इसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है। इसके लिए ध्यान देने पड़ेगा कि एजुकेशन, ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन ऐसे एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा शिक्षा, बचपन में दिमाग में जो है ना, लड़का बच्चा सब, ये पेड़ रुपेगा, रोज दिन प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा उसको। जब प्रैक्टिकल बड़ा करने पर तो एग्जाम में वो पास हो जाता है, उसका ऑक्सीजन वो देगा, पेड़ नहीं देगा। 1 मिनट उषा बंद करना, ऑक्सीजन का कितना जरूरत है। जब ऑक्सीजन नहीं मिला, टेक्नोलॉजी वो चंद्रग्रहण में जाए, मंगल ग्रह में कैसे जाएगा। Namaskaram. Today I want to pay my respect to all the vrukshas, starting from this banana tree at home. This banana tree is very useful and is very loved in our house. First, notice the first thing noticeable and also very important are these big leaves. These can be used for eating, rain shelter, and give plenty of oxygen and goodness in our house. Secondly, this trunk. Despite this trunk being very thick, it's still consumable and is very healthy to eat. As said in Bhagavad Gita, Bhumira ponalo vayuhu khammano buddhi vevacha ahankara iti yamme pinna prakriti rashtatha,
which translates to God exists in every part of nature, and Bhagavan or God certainly exists in our banana tree at home, Nandri. This is a film about forests. This is also a film about you. Our life is full of ups and downs. It doesn't matter who you are or where you live. There are always moments when your heart is broken, burnt, or hurt. When you have to face failure, rejection, or loss. So how do you pick yourself up when you are down? How do you start your healing when you are hurt? First, let us understand the brain. Over thousands of years, our body and brain have developed in the lap of nature. There is a part of you which still feels at home in nature. In fact, it has been scientifically proven that when you are in nature, your brain behaves differently. Being connected with nature results in some amazing changes inside your head, which begin to calm you and soothe your nerves. Your body picks up these signals to boost your immunity and your healing abilities. In our hectic lives, we overuse parts of our brain which deal with logic, information, and decision making. A world of desires and distractions does not give our brain the rest it deserves. The chatter in our heads often goes out of control, but most people ignore the signs until things go wrong. Many people turn to alcohol and drugs. Some resort to medicines and expensive therapies to get relief from symptoms. Only a few spend time and effort in finding the root cause of the problem. Ask yourself a simple question: what is the source of your health? If you rest your mind and reflect, you'll know. It's nature. Reconnecting with nature is like resetting your brain. This is a film about forests. This is also a film about you. One cannot escape the ups and downs of life, but one can always find calm in nature. One can always find comfort and clarity in the company of woods. The path to healing lies inside you. And when you can learn to carry the forest within you, you are always home. Your healing has begun. Namaskaram, Radhe Krishna. என் பேரு சித்தார்த். நான் துளசிக்கு பூஜை பண்ண போறேன்.
वृक्षवल्ल्याम्हा सोयरे वनचरे पक्षिः सुस्वरे आलवीति पक्षिः सुस्वरे आलवीति येने सुखे रुचे एकांताचा वास येने सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगयेत नाही गुणदोष अंगयेत आकाश मंडप पृथ्वी आसन आकाश मंडप पृथ्वी आसन रमे तेथे मन क्रीडा करी रमे तेथे मन क्रीडा करी कथा कमंडलू देह उपचार कथा कमंडलू